We had started with the stack, right? So what is a stack actually? It is a linear data structure, right? It is a linear data structure. Why a stack is called as a linear? Because data will be stored in a sequential pattern. Data will be stored in a linear pattern. That is the reason why a stack is a linear data structure. Okay. Then what we have seen? We have seen the definition. So how you will be defining a stack? A stack, it is an ordered. See, this word is very important. Okay. Ordered correction. And why this is called as ordered correction? Because you are going to store, okay, you are going to store the data in a sequential pattern. You are going to store the data one after another. Okay, so that is the reason why in other language I can say that a stack is a linear collection. And the definition of the stack, it will start with, it is an ordered collection of an elements, okay, in which insertion, right, and the deletion, this both things, okay, this both the things, it will be done from the one end only, and that end is called as top of the stack. So for the insertion and as well as for the deletion, we are having only one end, and that end is called as top of the stack. In a simple language, the top of the stack, you can say that this shows the current position, okay, this shows the current position of element. जो भी आपका स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, उसका जो भी करंट पोजीशन होगा, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? तो वो रिप्रेजेंट करने वाला है आपका टॉप. ओके, सो सपोज आई एम सेइंग दैट टॉप इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब होगा आपका स्टैक क्या है? योर स्टैक इज एम्प्टी. ओके, इफ आई एम सेइंग टॉप इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है टॉप के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? तो देयर आर 2 एलिमेंट्स. ओके, इफ आई एम सेइंग टॉप इज इक्वल टू 4, इसका मतलब होगा कि आपके स्टैक के अंदर कितने एलिमेंट्स है? तो 5 एलिमेंट्स है. So what this particular top indicates, it indicates the current position of the elements from your stack. So if top is equals to -1, meaning is that your stack is empty. If I say top is equals to 1, it means that there are 2 elements. And if I say top is equals to 0, right? If I say top is equals to 0, then the meaning of this is that there is currently 1 element in your stack. Okay, make this thing very clear. Okay, and always remember this part. So what is the top? It is a spatial position in a stack, right? Then we have seen there are 2 primitive operations that you can perform on the stack, right? The first one is called as a push and the second one is called as a pop. So what are the push and the pops actually? The push and pop, these are the special names given to the insert and the delete operation. So push operation is nothing but insert and the pop operation is nothing but a delete. Okay, remember this part. Then we have seen the algorithm. Okay, we have seen the algorithm for the push and the pop function. First we will see the algorithm for push function, right? So what do you mean by the push? Push is nothing but inserting a new element. There are some of the steps that you always need to remember this part, right? Because this is a very important question. Write algorithm for push and the pop. Okay, so you have to write this algorithm. You have to explain with the help of a diagram. Okay, so what is a step number 1 here? Before inserting, always remember in a push we have to check for the stack overflow condition, whereas in a pop you have to check for stack empty condition, right? बिकॉज अगर स्टैक के अंदर जगह ही नहीं होगी तो आप एलिमेंट्स डाल नहीं सकते हो. सो दैट इज कॉल्ड द स्टैक फुल कंडीशन. और स्टैक फुल कंडीशन को ही दूसरे लैंग्वेज में बोला जाता है. इन केस ऑफ दिस डेटा स्ट्रक्चर उसको बोला जाता है ओवरफ्लो कंडीशन. So stack flow and the overflow condition, this both parts are same. Okay, so in a step number 1 you have to check whether stack is full or not. And what is the condition for stack full or not? The condition is that suppose you are having array. Okay, you have declared the stack of size 5. पांच साइज की मैंने एक स्टैक डिक्लेयर किया है, एक एरे डिक्लेयर किया है. ओके, तो इसकी ये कब फुल होगी? जब टॉप की पोजीशन, राइट, इफ टॉप इज इक्वल्स टू साइज -1 होगा तब. सो व्हाट इज द साइज? साइज इज 5. ओके, सो व्हेनेवर आई से टॉप इज इक्वल्स टू 4, तो इसका मतलब होगा कि 5 एलिमेंट्स इस स्टैक के अंदर है एंड राइट नाउ माय स्टैक इज फुल, राइट? सो दिस इज द स्टेप नंबर 1. अगर स्टैक फुल होती है तो क्या करना है? तो यू जस्ट नीड टू प्रिंट द मैसेज. ओके, आपको मैसेज क्या प्रिंट करना है? दैट स्टैक इज फुल. और अगर स्टैक के अंदर जगह है तो यू हैव टू इंसर्ट द न्यू एलिमेंट. और वो एलिमेंट इंसर्ट करने से पहले आप लोगों को जो भी इंडेक्स होगा वो इंडेक्स आपको एक से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा. ओके, सपोज जब स्टैक एम्प्टी होती है तब आपका जो टॉप होगा दैट विल बी एट -1. ओके, और -1 को आपको बढ़ा के क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा. सो यू नीड टू इंक्रीमेंट द टॉप बाय 1 पोजीशन. सो हियर आई विल जस्ट राइट इंक्रीमेंट द टॉप बाय 1 पोजीशन. And in step number 4 you have to take the element from the user. Take element from the user.
कभी भी आपके एल्गोरिदम में whenever you see the word tag, तो इस tag को आपको रिप्लेस करना पड़ता है with a printf and the scanf. printf में you will be writing enter the element, in a scanf you will be scanning the element, जो user element देगा वो element. I'm just increasing this step, okay, so that it will be easy for you to write the program. And in a step number 5 I will be inserting the element. एलिमेंट इंसर्ट कहाँ पे करना है, तो स्टैक के टॉप पे इंसर्ट होगा, ओके, जो स्टैक होगा उसके टॉप पोजीशन पे इंसर्ट होगा. जिसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है दैट शुड बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड, ओके. तो मुझे किस में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तो मुझे स्टैक में इंसर्ट करनी है. कौन से पोजीशन पे इंसर्ट होगी, तो टॉप पोजीशन पे इंसर्ट होगी, सो स्टैक ऑफ टॉप. और क्या इंसर्ट करना है, एलिमेंट इंसर्ट करना है जो यूजर ने आप लोगों को दिया है. सो दीज आर द 5 स्टेप्स. आई थिंक इजी है, याद करना भी, ओके. स्टैक के अंदर स्टैक फुल कंडीशन फर्स्ट चेक करनी है. स्टैक फुल होती है तो यू हैव टू प्रिंट द मैसेज दैट स्टैक इज फुल. अगर स्टैक फुल नहीं है तो क्या करना है, टॉप को 1 से इंक्रीमेंट करना है और यूजर से वैल्यू लेनी है और वो वैल्यू आप लोगों को स्टैक के टॉप में इंसर्ट करनी है. सो दिस इज अबाउट अ पुश एल्गोरिदम. नाउ द पॉप एल्गोरिदम, ओके. what do you mean by the pop? Pop is nothing but the deletion, okay. Pop is nothing but deleting an element. So अगर first thing आपके स्टैक के अंदर एलिमेंट्स है ही नहीं तो कैन यू डिलीट समथिंग? नो. अगर वैल्यू है ही नहीं तो डिलीट क्या होगा? सो एट द स्टेप नंबर 1 व्हाट यू नीड टू चेक whether stack is empty or not, okay. So stack empty के लिए कंडीशन क्या है? तो stack empty के लिए कंडीशन है that you need to check if top is equals to -1. So जब भी कभी आपका top is equals to -1 होता है, at that time always remember आप लोगों का stack क्या होगा? empty होगा. और अगर ऐसा स्टैक एम्प्टी होता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू प्रिंट द मैसेज एंड दैट मैसेज इज स्टैक इज एम्प्टी. अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो क्या करोगे? अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो यू नीड टू प्रिंट द डिलीटेड एलिमेंट, राइट. यूजर को एक प्रॉपर प्रिंटफ देना बहुत जरूरी है. सो यू नीड टू प्रिंट द एलिमेंट, ओके. जो एलिमेंट डिलीट हो गया है वो एलिमेंट आप लोगों को प्रिंट करना पड़ेगा. एंड ये एलिमेंट प्रिंट कैसे होगा, तो ईएलई को आप लोगों को कुछ वैल्यू असाइन करनी है, ओके. कौन डिलीट होने वाला है, तो ईएलई डिलीट होगा. सो दैट शुड बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. किसकी वैल्यू डिलीट होगी, तो स्टैक के अंदर टॉप पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू विल बी डिलीटेड. सो एलिमेंट इज इक्वल्स टू स्टैक ऑफ टॉप. दिस इज स्टेप नंबर 3. ये आप लोगों को प्रिंटफ में देना है. एंड द लास्ट व्हाट यू विल बी डूइंग, अगर एक एलिमेंट मेरा डिलीट हो रहा है तो मेरा जो इंडेक्स था बिफोर सपोज दैट वाज इंडेक्स वाज एट 4, तो अभी कहाँ पे जाना चाहिए, 3 पे जाना चाहिए. अगर 3 पे था तो 2 पे जाना चाहिए. सो व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली, यू आर डिक्रीजिंग, ओके. सो डिक्रीज कर रहे हो, you need to decrement the top by 1 position. So these are 4 step algorithm for the pop, right. So we are having 2 primitive operations on the stack. First one is a push and the second one is a pop. Push is nothing but the insertion and the pop is nothing but the deletion, okay. I think this part is clear. Now then we have started with the stack application, okay. We have started with the stack application. I think I think and I hope you remember, okay. So stack application ke andar we have started with the expression, right. So what do you mean by the expression? You can say expression, it is a sentence, okay. In a very improper way you can say an expression is a sentence, okay. And this sentence is a combination of operands and the operators. So what do you mean by the operands? Operands are the elements on which you will be performing the operations. And what do you mean by the operations? Operations are nothing but any mathematical calculations. Either it is a plus, minus, multiplication, division, or anything, right. So expression, it is a sentence, right. It is a sentence with a minimum of 2 numbers and at least of 1 mathematical operation. Or I can say that expression, it is a sentence that can get evaluate to find out some answer. कुछ भी कर लो आप, लास्ट में आप लोगों को कुछ आंसर ही फाइंड आउट करना है, ओके. आप लोगों को कुछ वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसका मतलब you need to evaluate something, you need to find out the answer for something. So that is about expression. Then we have seen that the syntax for the expression. So the syntax for expression you can see on the screen right now is it is a result is equals to a plus b multiplication c. So how many operands are here? There are 3 operands, a, b and c, and there are 2 operators. First operator is a plus and the second operator is a multiplication. So you're performing plus, right, and you're performing the multiplication on the 3 operands. So this is the syntax for expressing any expression. Then we have seen we are having 3 types of expressions, right. We can have 3 types of expression: infix, prefix and the postfix one.
The infix expression, these are for us, these are for the humans. Okay, we can understand the operator precedence, right, and we can evaluate something. But for the computer to understand, कंप्यूटर को ये समझना इट इज वेरी डिफिकल्ट. ओके, और अगर आप लोगों को मशीन को कोई इंस्ट्रक्शन देना है कि लाइक 1+2, ओके, 1+2 डिवाइडेड बाय 3, तो कंप्यूटर को ये समझने के लिए ऑपरेटर का प्रेसिडेंस जानना भी बहुत जरूरी रहता है. So we know that is a time complex thing, right? It will take some time. Complexity जो भी होगा उसका वो increase हो जाएगा. So what you need to perform? You need to convert your infix expression to the postfix one. तो आपका जो भी infix का expression होगा वो आप postfix में convert करोगे, right? And then your computer, your machine can evaluate that particular expression. तो पोस्टफिक्स ही क्यों यूज होता है, इनफिक्स क्यों यूज नहीं होता है कंप्यूटर और मशीन के अंदर? तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना इज वेरी इजी फॉर द कंप्यूटर. कंप्यूटर को कभी भी उसका प्रेसिडेंस ध्यान में रखने की जरूरत नहीं रहती है. उसको जो भी ऑपरेंड्स मिलेंगे उसके ऊपर वो डायरेक्टली वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देगा. इन दिस टुडेस लेक्चर वी विल सी हाउ टू परफॉर्म दैट. ओके, वो कैसे होता है इवैल्यूएट. सो पोस्टफिक्स ही इवैल्यूएट होता है, राइट? प्रीफिक्स भी हो सकता है बट पोस्टफिक्स ही रहता है. ओके, एंड इनफिक्स फॉर अस, इनफिक्स का एक्सप्रेशन होता है x + y. ओके, प्रीफिक्स का रहता है +x5, x and y, and the postfix का रहेगा x, y and the plus. So these are about the expressions. Then we have started with the expression evaluation. Okay, sorry, the conversion part. We have started with the conversion part. जो पहला हम लोगों ने देखा था, that is infix to the postfix one. We have seen conversion from infix to the postfix one. तो infix to postfix conversion के वक्त कुछ rules है जो आप लोगों को हमेशा याद रखने हैं. Okay, the first thing, छोटे पे बड़ा चलेगा, बट सॉरी, हाँ, छोटे पे बड़ा चलेगा, बड़े पे छोटा नहीं चलेगा. इफ यू हैविंग द ऑपरेटर विद लोअर प्रेसिडेंस, राइट, तो वो आप लोगों के बड़े प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर पे नहीं चढ़ सकता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट सी हियर इन अ स्टैक, you can see the already you're having the plus operator. Okay, you're having in a stack you're having plus operator. next कौन सा ऑपरेटर आ रहा है? तो नेक्स्ट ऑपरेटर जा रहा है आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन. एंड यू कैन वी नो दैट the precedence of multiplication is higher than the plus, so it is allowed. Okay, छोटे पे बड़ा जा रहा है, so it is allowed. You need to insert, you need to push the multiplication into the stack. Okay, now take the next example. आप लोगों के पास जा रहा है division. We are having the division. Now just tell me, बोला था, this is a rule number 2, you can't have the two operator of the same precedence at the same time in the stack. स्टैक के अंदर एट अ टाइम दो सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर नहीं रह सकते हैं. एंड मल्टीप्लिकेशन एंड द डिवीजन, these are the two operators with the same precedence, so it is not allowed. So what you are supposed to do, you need to pop the already have whatever the operator that you are having already into the stack, you need to pop that. तो डिवीजन के पहले मेरे पास कौन सा ऑपरेटर था? तो मेरे पास था मल्टीप्लिकेशन. तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लिकेशन को क्या कर दूंगी? आई विल पॉप द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर एंड देन आई विल इंसर्ट दिस डिवीजन. अभी मैंने डिवीजन डायरेक्टली इंसर्ट क्यों किया? मैंने प्लस को पहले पॉप क्यों नहीं कर दिया? तो डिवीजन का भी जो प्रेसिडेंस है वो प्लस से ज्यादा होता है. सो यू नीड टू इंसर्ट दिस. ओके, यू नीड टू इंसर्ट दिस. लेकिन अगर ये डिवीजन के जगह पे कोई, ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग इटसेल्फ. ओके, डिवीजन के जगह पे अगर आप लोगों के पास माइनस ऑपरेटर रहता तो क्या करते? इफ डिवीजन के जगह पे माइनस आने, इफ दैट वाज द नेक्स्ट ऑपरेटर, तो क्या करते? राइट, यू ऑलरेडी हैविंग द प्लस ऑपरेटर, राइट, यू आर हैविंग द प्लस ऑपरेटर. और अगर आपके इसमें अगर माइनस जा रहा है तो इट इज नॉट अलाउड. right, plus or minus, these are the two operator with the same precedence. So what you are supposed to do, you have to pop the plus और उसके बाद में you can insert the minus operator into the stack. I think these rules are clear to you right now. Okay, and you are able to solve the examples, right? Then we have started with the infix to the prefix one. Okay, फिर हम लोगों ने start किया था infix to the prefix one. तो infix to prefix में रूल क्या होता है? तो रिमेनिंग रूल्स आर सेम. सिर्फ एक चीज आप लोगों को याद रखनी है कि जो भी आप लोगों को ये एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है, यू नीड टू रिवर्स दैट एक्सप्रेशन. आप लोगों को वो सिर्फ रिवर्स करना है. ओके, और वो रिवर्स करके देयर आर समथिंग, राइट, वहाँ पे और कुछ है जो आप लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है. एक मिनट, जस्ट लेट मी ओपन द स्क्रीन अगेन and then I will explain. Today we are going to solve the infix to the prefix one. Just a minute. Hope I'm having the okay.
अपना Just 2 minutes. Okay. Okay, so this is the example for infix to the prefix. Okay, you can see the answer and we are having the expression in a prefix format, right? तो यहाँ पे रूल क्या करना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, बट अगेन फॉर दिस लेक्चर सी, जितने भी क्लोजिंग ब्रैकेट आते हैं वो सारे के सारे क्लोजिंग ब्रैकेट आप लोगों को ओपनिंग ब्रैकेट से रिप्लेस करना है. सो वेन एवर यू फाइंड आउट एनी क्लोजिंग ब्रैकेट तो उसको रिप्लेस करना है विद ओपनिंग ब्रैकेट, राइट? जो भी एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन को आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना है फ्रॉम द लास्ट. ओके, सो जस्ट सी, मुझे लास्ट में क्या मिल रहा है, तो 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आई विल बी रिप्लेसिंग दोज विद सॉरी क्लोजिंग मिल रहे हैं, तो आई विल बी जस्ट रिवर्सिंग दिस एंड आई विल बी एंटरिंग द 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स इनटू द स्टैक. नेक्स्ट वन क्या जा रहा है, ई, सो ई. नेक्स्ट वन इज अ माइनस, सो माइनस, देन डी, then again I'm having opening bracket, तो इसको रिप्लेस करना है आप लोगों को क्लोजिंग के साथ, so here I'm having a closing bracket. Then you having a division, so division, then again you are having a closing, तो closing को रिप्लेस किससे करना है आप लोगों को, opening से, opening, then I'm having C, multiplication plus sorry B, then you having opening or replace this with the closing, then plus, then A, and at the last you have to replace the opening with the closing one. और बाकी सारे के सारे रूल्स सेम होंगे. ओके, बाकी सारे रूल्स सेम है. at a no time the lower priority operator, right, can be at the top of the stack at no time. So if you find out any situation like that, okay, so you need to pop the already having operator और उसके बाद में you can push the lower precedence operator into the stack, right? ये कुछ रूल है, छोटे पे बड़ा चल जाएगा, बड़े पे छोटा नहीं चलेगा. एंड whenever you जब भी कभी आप लोगों के पास ओपनिंग ब्रैकेट है, ओके, उसके अंदर कोई ऑपरेटर आ रहा है और उसके बाद में क्लोजिंग ऑपरेटर आ रहा है, तो उसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स होंगे आप लोगों को वो पुश पॉप आउट करने पड़ेंगे. ओके, एंड नेक्स्ट वन, दो ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस एक ही टाइम पे एक ही जगह पे स्टैक के अंदर नहीं रह सकते. सो द रूल्स आर सेम. ओके, सो जस्ट आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस राइट नाउ बिकॉज पता है, right? So I'm just giving you 5 to 10 minutes. We're having some complex example to solve here for stack infix to the postfix one and infix to the prefix one. So in this 5 to 10 minutes, you are supposed to solve 3 examples. Okay, and मैं किसी को भी screen share करने के लिए बोलूंगी. You need to share your screen. और अगर if you fail to display, okay, तो मैं आज की attendance आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ. Make this thing very clear. Okay, किसी को भी पूछूंगी. So just write down the question for this 3 questions. We are having 3 questions here. Let me share the screen again. Just a minute. और अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो आप लोगों को अब भी पूछना है कि मैडम हम लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा है. So you need to ask. हाँ, सी, एक मिनट. Take down the first question. Okay, ये क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद में आप लोगों को बोलना है कि ये हो गया है, देन आई विल बी शेयरिंग द नेक्स्ट वन. दिस इज द लास्ट लेक्चर फॉर this particular part, infix to prefix, okay, and the postfix one. Write down the Ma'am, question. It is a plus, take write down the questions very clearly, okay? Don't get confused between the things. This is C, this is opening bracket, a plus opening bracket b multiplication c minus opening bracket d divided by e, right? This is a raised to symbol, this is a raised to symbol, this is right. So e, this power symbol f, then the closing plus multiplication g, closing multiplication h. Just write down the question. I'm giving you 5 minutes.
It is 9:39. This is the first question you need to attempt. If anybody is having any doubt, okay, you have to ask. Yes, already हम लोगों ने 2 lectures इस पे ले ही लिए, तो I'm just considering that all of you know how to solve this. अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को पूछना पड़ेगा. Yes, I know सबका मैथ्स अच्छा नहीं रहता है, सबको मैथ्स पसंद नहीं आता है. यहाँ पे if you're not comfortable to say, you can just put the message in chat box. Okay, मैं किसी को भी बोलूंगी to share the screen. Okay, पोस्ट फिक्स करना है. यस, पोस्ट फिक्स प्रीफिक्स को दूंगी अभी. You need to convert into the postfix one. हो गया है किसी का? मैम 1 मिनट रुको. अगर हो गया होगा तो you can put your answer into the chat box. हो गया? यस मैम. Okay.
Roll number 53. I think that you have just done one mistake over here. आपने A, B, C के बाद में प्लस लिया. It is not plus, हाँ, it is multiplication. मतलब सिर्फ आप लोगों आपका वो ये गलत किया आपने. Just check your answer. जो आपका stack है वो stack एक बार check कर लो. Check your stack. Okay, ma'am. चलो हुआ है. Roll number 21. मैम एक क्वेश्चन है. You have to share your screen. मैम मैम Quiz 21. Yes, ma'am. Okay. થઈ ગયું. हाँ मैम થઈ ગયો. Ma'am, just a minute. No. Roll number 4. Okay, so still you are doing mistake, right? $48. Yes. मैम एक्चुअली मुझे क्वेश्चन था कि डिवीजन पे अगर रेस टू आएगा तो डिवीजन रहेगा ना. मैं ऑडिबल थी हूँ मैम. हेलो. I'm talking something but सुनाई नहीं दे रहा है. ओके. मैम स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है. Share your screen. No. Roll number 79. Okay, the 37. We are having A, B, C multiplication. Yes. अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना तो आपको बोलना पड़ेगा मैडम और एक बार समझा दो. नहीं चलेगा बिकॉज ये क्वेश्चंस जो होते हैं ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. दिस आर वेरी स्कोरिंग सब क्वेश्चंस. Most of you are doing a mistake. A, B, C multiplication, D, E, F, then that raised to symbol, then division, then G. Yes, roll number 37, it's correct, huh? Baki, roll number 79, it's wrong. Roll number 4, it's wrong. Uh, 21, A, B, C multiplication. Yes. What? 48. શું કહે છે? Ma'am, me too, it's wrong answer. 45, roll number. Have you shared your answer? Okay. ચલો હજુ એકવાર એક્સપ્લેન કરું છું પણ હવે કોઈને પણ ડાઉટ હોય ને તો તમે પૂછી લેજો, હા? બીકોઝ ऑपरेटर प्रेसिडेंस खबर पड़े છે તમને? आप लोगों को समझ में आ रहा है ऑपरेटर प्रेसिडेंस कि वहां से स्टार्ट करना है? क्वेश्चन था. ऑपरेटर प्रेसिडेंस के लिए जो डिवीजन है और रेस टू है उसमें से किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है? देखो दिस रेस टू जो सिंबल है ना दैट इज आपका ब्रैकेट होता है. ब्रैकेट के बाद में जो हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है दैट विल बी ऑफ दिस रेस टू सिंबल. तो पहले रेस टू आएगा, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन और उसके बाद में डिवीजन आता है. ओके. ओके. यस मैम. मैं सबको पूछ रही हूँ, डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस फॉर वन मोर टाइम? कि अभी कंटाला आ रहा है सुन सुन के, बट स्टिल यू आर डूइंग द मिस्टेक, ऑल ऑफ यू. करवा दो मैम. मैडम हाँ ફરી વખત ફરીને રિપીટ કરો એમ કાંઈ ખબર નથી પડતી આમાં. तेज केવું છું. ચાલો જો થોડા limitations આવશે, okay, because such a type of questions requires blackboard and the writing something, right?
મારી પાસે હમણાં છે નહીં, સો ખાલી હું એક્સપ્લેન કરીશ, પણ તેનામાં બી તમને નહીં ખબર પડતી હોય તો તમને આ પૂછવું પડશે, રાઈટ? ક્વેશ્ચન્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને બીજી એક વાત કે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં બી બહુ બધી વાર પૂછાય છે. લેટ મી જસ્ટ ઓપન ધ સ્ક્રીન. 2 minutes. This was the question, right? આ ક્વેશ્ચન હતો તમારો. શું કહે છે? What is the question actually? A plus, right? Then we are having opening bracket B multiplication C minus opening D divided by E, and then we are having the raised to symbol. Okay, હવે એવું કઈ વસ્તુ લખું છું, યાદ રાખજો. Precedence, I'm just writing the precedence over here. So the highest precedence, it will be of a curly brace. Okay, curly brace, then your square brackets. इसका अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा प्रेसिडेंस वाला तो लेके रख देना. देन यू आर हैविंग द स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन यू आर हैविंग द राउंड ब्रैकेट. ओके, सो ये होता है प्रेसिडेंस, सबसे पहले हाईएस्ट प्रेसिडेंस. इसके बाद में जाता है दैट विल बी ऑफ अ रेज टू. रेज टू को ही बहुत सारे जगह पे यू कैन सी दिस इज अ सिंबल, दैट इज अ डॉलर सिंबल, राइट? इसके बाद में जो प्रेसिडेंस आता है दैट इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, राइट, एंड द डिवीजन. उसके बाद में जो आता है दैट इज अ प्लस, और उसके बाद में आता है आप लोगों का माइनस. सो दिस इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस. यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर दिस ऑपरेटर प्रेसिडेंस. ओके, तो अभी क्या करना है, मैं सिंबल में आप लोगों को लाइन बाय लाइन एक एक एलिमेंट लिख लेना है. वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस इनटू द पोस्टफिक्स में कर रहे हैं, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है वैसे के वैसे लिखना है स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट. सो फर्स्ट एलिमेंट है आप लोगों का ए. सो व्हाट इज ए? ए इट इज ऑपरेंड है. ओके, तो ऑपरेंड कहाँ पे जाएगा? तो ऑपरेंड जाता है डायरेक्टली इनटू द आउटपुट. तो ये आउटपुट के अंदर आप लोगों को डाल देना है. नेक्स्ट एलिमेंट क्या जा रहा है? तो नेक्स्ट एलिमेंट इज अ प्लस. सो व्हाट इज अ प्लस? प्लस इट इज अ ऑपरेटर. तो प्लस को आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा इनटू द स्टैक. रिमेंबर दिस पार्ट. ऑपरेंड्स जाएंगे इनटू द आउटपुट एंड द ऑपरेटर्स जाएंगे इनटू द स्टैक. नाउ द नेक्स्ट वन इज ओपनिंग ब्रैकेट. वी नो ओपनिंग ब्रैकेट का जो भी प्रेसिडेंस है वो हाईएस्ट होगा, तो ओपनिंग डायरेक्टली पुश हो जाएगा. तो ये कहाँ पे इंसर्ट होना है? आप लोगों के स्टैक के अंदर इंसर्ट होगा. और ऊपर वाला जो भी सीक्वेंस आप लोग लिख रहे हो वो कंटिन्यू लिखना है आप लोगों को. ए, राइट, और उसके बाद में जो जा रहा है दैट इज बी, राइट. तो बी कहाँ पे जाएगा? अगेन बी इट इज ऑपरेंट, सो इट शुड बी इंसर्टेड इनटू द आउटपुट. सो ये गया आउटपुट के अंदर. नेक्स्ट क्या जा रहा है? तो नेक्स्ट जा रहा है मल्टीप्लीकेशन. ओके, अभी यहाँ पे प्रेसिडेंस नहीं देखना है आप लोगों को फर्स्ट टाइम. ओके, फर्स्ट टाइम जो भी आएगा आप लोगों को प्रेसिडेंस नहीं देखना पड़ेगा. अगर कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है, राइट, तो उसके ऊपर आप लोगों का जो भी नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है वो ऑपरेटर आप लोगों को इंसर्ट कर देना है. और कब तक इंसर्ट करना है? ओके, जब तक यहाँ पे कोई भी लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं आता, और जब तक कोई भी यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं आता, तब तक यू आर सपोज टू जस्ट इंसर्ट इनटू द स्टैक. ओके, तो ये एलिमेंट जा रहा है मल्टीप्लिकेशन. सो यहाँ पे मैं कोई भी प्रेसिडेंस राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सी, बिकॉज क्या बोलता है वो कि जो भी आप लोगों का ब्रैकेट में होगा दैट विल बी द फर्स्ट वन टू गेट इवेल्युएटेड, राइट. सो ये यहाँ पे मैं जस्ट इंसर्ट कर दूंगी. सो दैट इज मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या जा रहा है? सी जा रहा है. सो सी इट इज ऑपरेंड. ऑपरेंड कहाँ पे जाएगा? तो वो जाएगा आउटपुट स्टैक के अंदर. नेक्स्ट एलिमेंट क्या जा रहा है? तो नेक्स्ट एलिमेंट जा रहा है आप लोगों का माइनस. नाउ जस्ट पे अटेंशन हियर. आप लोगों के पास यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रही है, उसके बाद में आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, और क्या जाने वाला है? तो अभी जाने वाला है दिस माइनस सिंबल. और मैंने पहले बोला बड़े पे छोटा नहीं चलता है, राइट. तो ये वाला जो है दिस इज द मल्टीप्लिकेशन, इसका प्रेसिडेंस हायर है एज कम्पेयर टू द -1. तो ऐसा कोई भी सिचुएशन आता है तो क्या करना पड़ेगा? जो मल्टीप्लिकेशन होगा ना उसको सबसे पहले पॉप आउट करना है. ओके, तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मैंने पॉप आउट कर दिया. कहाँ पे लिखा? आउटपुट स्टैक के अंदर. और जो भी एलिमेंट था, जो नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला था दैट वाज द माइनस, तो माइनस को मैंने इन कर दिया. और इन करके कहाँ पे रखा है मैंने? तो स्टैक के अंदर. ये समझ में आ रहा है? ओके, अगर कोई भी जगह पे ऐसा हो रहा है कि लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर स्टैक के अंदर आ रहा है, तो आप लोगों को जो ऑलरेडी एलिमेंट होगा वो एलिमेंट आप लोगों को पॉप आउट करना पड़ेगा. उसके बाद में ही आप लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर स्टैक के अंदर इंसर्ट करवा सकते हो. ओके, सो ये हो गया मेरा, मैंने पॉप आउट कर दिया. नेक्स्ट एलिमेंट क्या जा रहा है? तो नेक्स्ट एलिमेंट जा रहा है ओपनिंग ब्रैकेट. पहले भी बोला अगर ओपनिंग ब्रैकेट आ रहा है तो आप लोगों को प्रेसिडेंस देखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू
पुश इट, तो यहाँ पे मैंने पुश कर दिया। नेक्स्ट क्या जा रहा है, तो डी जा रहा है, डी इट इज ऑपरेंड, तो डी कहाँ पे जाएगा, तो डी जाएगा इनटू द आउटपुट स्टैक। नेक्स्ट एलिमेंट क्या जा रहा है, तो नेक्स्ट जा रहा है डिवीजन अगेन। ओके, आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास प्लस है, you're having opening bracket, you're having minus, you're having opening bracket, and then you're having the division, तो division enter कर देना है, यहाँ पे कोई प्रेसिडेंस देखा नहीं जाता है। ओके, फॉर द फर्स्ट वन ओनली, सो ये हो गया डिवीजन। डिवीजन के बाद में क्या जा रहा है, ई जा रहा है, ई क्या है, ऑपरेंड है, कहाँ पे जाएगा, इनटू द आउटपुट स्टैक, गया आउटपुट स्टैक के अंदर। नेक्स्ट एलिमेंट क्या जा रहा है, तो नेक्स्ट एलिमेंट जा रहा है आपका रेज टू सिंबल, ओके, टू द पावर वाला, तो ये इसका प्रेसिडेंस जो है आप लोग देख सकते हो, इसका प्रेसिडेंस जो है वो डिवीजन से ज्यादा है। ओके, इसका प्रेसिडेंस डिवीजन से ज्यादा है, सो इट इज अलाउड, छोटे पे बड़ा चल जाएगा। सो आई एम गोइंग टू इंसर्ट दिस सिंबल इनटू द स्टैक, ये सिंबल मैंने स्टैक के अंदर इंसर्ट करवा दिया। नेक्स्ट क्या जा रहा है, तो नेक्स्ट जा रहा है एफ, एफ क्या है, एफ इट इज ऑपरेंड, कहाँ पे जाएगा, आउटपुट स्टैक के अंदर। नेक्स्ट क्या जा रहा है, तो नेक्स्ट जा रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो अभी कभी भी आप लोगों का क्लोजिंग ब्रैकेट जा रहा है तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट थे आप लोगों को वो पॉप आउट करने हैं। किस तरीके से पॉप आउट करोगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो सबसे लास्ट में क्या आया था, तो लास्ट में आया था पावर सिंबल और उसके बाद में आया था डिवीजन। तो सबसे पहले बाहर जो जाएगा दैट विल बी द रेस्ट सिंबल और उसके बाद में क्या जाएगा, तो डिवीजन जाएगा। ये उंदा ये रिवर्स में नहीं लिखना है, राइट, ये ऐसे डिवीजन पहले और उसके बाद में द रेस्ट सिंबल ऐसे नहीं लिखना है, लास्ट इन फर्स्ट आउट ही फॉलो होता है स्टैक के अंदर। तो पहला एलिमेंट जो आउट होगा दैट विल बी द रेस्ट सिंबल और उसके बाद में जाएगा आपका डिवीजन। ओके, सो अभी आपके स्टैक के अंदर क्या है, तो मेरे स्टैक के अंदर राइट नाउ मेरे पास सिर्फ प्लस है, ओपनिंग ब्रैकेट है और राइट नाउ आई एम हैविंग द माइनस सिंबल। ओके, नाउ जस्ट सी नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा जा रहा है, तो नेक्स्ट एलिमेंट जा रहा है आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का जो भी प्रेसिडेंस है वो प्रेसिडेंस माइनस से ज्यादा है, सो इट इज अलाउड, छोटे पे बड़ा चल जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, इनटू द स्टैक। नेक्स्ट क्या जा रहा है, तो नेक्स्ट जा रहा है जी, व्हाट इज जी, इट इज एन ऑपरेंड, तो ऑपरेंड कहाँ पे इंसर्ट होगा, तो ऑपरेंड इंसर्ट होगा इनटू द आउटपुट स्टैक, ये डाल दिया आउटपुट स्टैक के अंदर। नेक्स्ट क्या जा रहा है, तो नेक्स्ट जा रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, सो व्हाट यू आर हैविंग इनटू द स्टैक, you are having plus, you are having opening bracket, you are having minus, then you are having multiplication, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में क्या जा रहा है, तो क्लोजिंग ब्रैकेट जा रहा है। जब भी कभी ऐसा कुछ भी आता है तो यहाँ पे आप लोगों को रिमूव कर देना है। किस फैशन में रिमूव करोगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में क्या आया था, मल्टीप्लिकेशन, तो सबसे पहले बाहर क्या जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद में बाहर क्या जाएगा, माइनस। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। नेक्स्ट क्या जा रहा है, तो आप लोगों के पास स्टैक के अंदर ऑलरेडी क्या है, तो आपके पास स्टैक के अंदर ऑलरेडी है प्लस, नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा जा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन जा रहा है, और मल्टीप्लिकेशन का जो भी मल्टीप्लिकेशन का जो भी प्रेसिडेंस है वो प्लस से ज्यादा है, सो इट इज अलाउड, तो ये इंसर्ट हो जाएगा, इंसर्ट कर दो स्टैक के अंदर, दैट्स इट। और लास्ट एलिमेंट क्या जा रहा है, तो लास्ट एलिमेंट जा रहा है आप लोगों का एच, तो एच कहाँ पे जाएगा, एच जाएगा इनटू द आउटपुट स्टैक, ये गया आउटपुट स्टैक के अंदर। सो वी आर नॉट हैविंग एनी अनदर एलिमेंट, तो अभी आप लोगों को सिर्फ पॉप आउट करना पड़ेगा। सो क्या एलिमेंट है आप लोगों के पास स्टैक के अंदर, आप लोगों के प्लस है प्लस और मल्टीप्लिकेशन, इसको आप लोगों को पॉप आउट करना है लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो सबसे लास्ट में क्यों आया था, मल्टीप्लिकेशन, सो सबसे पहले बाहर कौन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में बाहर कौन जाएगा, तो प्लस जाएगा। एंड दिस इज योर आंसर फॉर इन फिक्स टू द पोस्ट फिक्स ऑपरेशन, राइट। और छोटे छोटे और बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल क्वेश्चंस नहीं आते इसके लिए, you will get some complex example to solve in the examination only, okay, so ये याद रखना। और एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन दे रही हूँ, try to solve that, okay, बहुत जल्दी करने की जरूरत ही नहीं है। I was about to stop over here but I think you are having some doubts। और एक solve करो क्वेश्चन, just a minute, give me 1 minute only। We have done with this part। Okay, try to solve this one। Which minute? अभी आना ही चाहिए, हाँ, अभी किसी का भी आंसर में कोई भी गड़बड़ी मुझे नहीं चाहिए। प्रेसिडेंस अगर आप लोग चाहते हो, अगेन आई विल राइट डाउन, ओके, एक बार और आई विल राइट द प्रेसिडेंस, बट अभी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। सी अगेन यू नीड टू डू द पोस्ट फिक्स वन, पोस्ट फिक्स ही करना है। लेट मी शेयर द स्क्रीन, ओके, सॉल्व दिस एग्जांपल। सबको आना चाहिए अभी,
A division B, then raised to symbol C plus D multiplication E minus A multiplication C and the closing bracket. Don't get confused. There are two A and two C. So A and C are repeating over here. Try to solve this one. आना ही चाहिए अभी. If you want me to write the precedence over here, just see. पहला जाएगा ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट होगा, लेकिन सबसे हाईएस्ट प्रेसिडेंस रहता है करली ब्रैकेट का, राइट. नेक्स्ट जाता है आप लोगों का दिस सिंबल, इसको ही किसी किसी जगह पे यू विल सी अ डॉलर सिंबल एज वेल. नेक्स्ट आप लोगों का मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, प्लस and then minus. Okay, try to solve this one. It is very easy actually as compared to the last one. कोई भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है. का हो गया होगा तो you can just put your answer into the chat box. Okay. Yes. ABC. Yes, it is A, B, C, then the raised to symbol, then division, multiplication, plus A, C, then multiplication and then minus. Yes. बहुत सारे लोग ने किया है, बहुत सारे लोगों का अभी भी प्रॉब्लम भी है. So the answer is A, B, C, right? Then raised to symbol, then division, DE, multiplication plus AC, multiplication and then minus. Just let me put the answer in the chat box.
Okay, the answer is A, B, C. Then just putting the dollar symbol here. Dollar symbol, division, DE, multiplication. Then after multiplication, plus AC, multiplication, and then minus. This is the answer. Okay, I have shared this. Okay, let me share the screen again. बहुत सारे लोगों ने किया है लेकिन अभी भी थोड़ा प्रॉब्लम है. I don't know why. Hello, ma'am. Can I do the screen share? Okay, you can. Let me just close my one. Okay. कितने लोगों को अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है? You need to answer very honestly, huh? Here is showing only the host can share this in No, this I meeting. have. You can now. No, I can't. Because my okay. Now check. Yes, ma'am. Okay. This one. Is it right? Yes. Same question. Starting. Bracket, then A, then Yes. then division AB, Hmm. then exponential. So we so here Yes. division and मैम उसका मतलब डिवीजन छोटा है तो हाँ. एक्सपोनेंशियल आ सकता है. Right. बाद में C आएगा. हाँ. बाद में एडिशन दोनों से छोटा है तो हम Yes. क्या करेंगे दोनों को पॉप आउट कर देंगे. तो Yes. पहले एक्सपोनेंशियल देन डिवीजन Yes. देन वो चलता रहेगा प्लस बाद में डी जाएगा हमारे आउटपुट में. Hmm. इधर एडिशन छोटा तो मल्टीप्लिकेशन आ सकता है. Right. It's देन correct. ई आउटपुट Hmm. तो माइनस दोनों से छोटा है एडिशन प्लस मल्टीप्लिकेशन. Yes. तो हम दोनों को पॉप आउट Pop out कर देंगे. Yes. देन ए हाँ. सॉरी देन माइनस Minus. Hmm. बाद में ए आउटपुट में बाद में हाँ. मल्टीप्लिकेशन. तो इधर मल्टीप्लिकेशन माइनस से बड़ा है तो वो आ सकता है. Yes. देन सी आउटपुट हाँ. then bracket close then pop out multiplication and minus. Yes, it's correct. Okay. चलो तो अभी मुझे ना मैंने लास्ट इसमें नहीं दिए थे एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बिकॉज मुझे ऐसा था कि एक बार मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा. सो अभी आज के दिन में मैं आप लोगों को 5 या 6 आई एम गोइंग टू गिव यू 5 to 6 इनफिक्स टू द पोस्ट फिक्स ओनली. इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स के एग्जांपल दे रही हूँ, आप लोगों को वो सॉल्व करने हैं. ओके. You need to solve this and you need to upload the assignment. Theory class के अंदर I will be uploading. यहाँ पे upload नहीं, practical के इसमें upload नहीं कर रही हूँ. 5 to 6 questions are there. Whether they are repeating or something, आप लोगों को करना है. अगर repeat भी हो रहे हैं, it's okay. जो भी questions है वो आप लोग solve कर लेना. Right? I'm just ending the lecture right now because 2 ही मिनट बाकी है. So we will meet in the next lecture. और next lecture के अंदर again we are going to see the prefix one और उसके बाद में evaluation. तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत ज्यादा खींचने नहीं वाली हूँ. सो वी आर गोइंग टू कवर द 2 parts, प्रीफिक्स वन एज वेल एज द इवैल्यूएशन पार्ट. ओके. और आज के एग्जाम मतलब आज के लिए आई एम पोस्टिंग वन असाइनमेंट विद इन 1 hour. द असाइनमेंट विल बी अप ऑन योर क्लासरूम, सो यू हैव टू सॉल्व दैट असाइनमेंट. ओके. गलत आ रहा है तो आने देना. लेट मी चेक कितने लोगों को समझ में आ रहा है. ओके. सब्जेक्ट बहुत इजी नहीं है, सब्जेक्ट इज समवट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. सो टेक योर टाइम. अगर एक्स्ट्रा भी मुझे लेक्चर लेने की जरूरत पड़ती है सो आई एम रेडी. ओके. बट सबको समझ में आना ही चाहिए. सो आई एम एंडिंग द मीटिंग ओवर हियर. वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर.